And I could hear aroma of different mothers and kitchen.
जल्दी जल्दी रख दो. Anybody still eating? Want to continue? नहीं नहीं, I'm not punishing them. Want to continue eating? कोई बच्चा खाना चाहता है? अरे जो टिफिन लाया, बड़ा पाव मैं कहाँ से लाया? हाँ, they can go to the staff room. हाँ, जा जा जा. अरे ले. Shall we? अभी नींद से जागा है सब लोग? Yes sir. अभी जो भी yawn करेगा, हाँ, I cannot see the menu in between coming out of the mouth. जा जा उधर जा, उधर जा. आराम से जाके खा के. कोई कुछ नहीं बोलना. Take the water bottle. अरे बाबा तू जा जाके खा के आना. चलो, I am starting. Write the next season in your notebook. So first two season clear. So directly write the next season. Come on. Retreating monsoon season. हाँ, ये अभी start होगा. 1 second, 2 second. Yes sir. This is MS's monsoon season. Come on, write quick. Yeah, those who are unfinished their tiffin and still hungry can go to the place. I'll tell them. हमारा staff room में बैठो, खाओ, फिर आ जाओ. Write down. Point number 1. It is the month of. It is the month of. It is the month of October and November. It is the month of October and November in which there is seasonal reversal of wind system. In which there is, I'll repeat. In which there is seasonal reversal of wind system. Please everyone underline that word, seasonal reversal of wind system. Seasonal reversal of wind system. I'll explain, please write up. Second point. Winds blow from land to sea. Winds blow from land to sea. Inside the bracket you write dry. Winds blow out or blow from land to sea, dry. Moving out from north to east. Moving out from north to east. Bracket में डाल देना north east monsoon. Next point. There is low temperature. There is low temperature and high pressure. There is low temperature and high pressure, hence, H-E-N-C-E, hence, winds move or retreat. You know the spelling of retreat? Hence, wind moves or retreats, giving light rainfall. Giving light, bracket में डाल देना only 20%. Light rainfall to coastal parts of Andhra Pradesh. Coastal parts of Andhra Pradesh and coastal TN लिख देना Tamil Nadu. Giving light rainfall to coastal parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Next. Write down next का मतलब क्या है? During this season, there is
a sudden increase in the temperature, sudden increase in the temperature with high humidity, sudden increase in temperature with high humidity, referred as REFERR, referred as October heat, referred as October heat. And the last point, heat. This rainfall picks up more moisture crossing wall, Bay of Bengal, and highly beneficial and highly beneficial for. Don't write both the word. Let me check how many of you remember. Which crops can I say? Kharif or Rabi? Kharif. Confirm? Yes. Beneficial for Rabi crops. Let go. Rabi are those crops which are grown during the winter season. अभी winter ही चल रहा है ना. और Kharif are those crops which are sown during the summer or beginning of the rainy season. Now everybody look at that paragraph and tell me, is it different from southwest? How different? Those who are yawning, I could can't forget the picture. And they were yawning profusely. मैंने बोला बिंदास करो, both boys and girls. So could you add to some knowledge? देखो, one thing you have to remember, southwest, no doubt, entire country. Northeast only AP and TN. But can we neglect the importance of northeast? No. Why not? वो तो दो ही स्टेट को दे रहा है ना. Sir, because Rabi crops is important. ठीक है, very good. What else do you think? I don't want this bunch to answer like this. Anybody, come on. Sensible ka ho ja. Like when the monsoon has entered India, what was the condition? India experienced high temperature and low pressure. But now what is India experiencing? Low temperature and so will the wind go back? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? So did I write the word seasonal reversal of? What does it mean? The monsoon which entered India, pull that curtains or come this side. Monsoons which have entered India, now it is going back. I think I always feel you are the best example of going back. घर से बाहर निकलने का टाइमिंग पक्का नहीं रहता. Going back, वो तो और भी पक्का नहीं रहता. And your बेचारा parents will be calling you. पहला आंसर क्या है? मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा है. And तुरंत मम्मी बोलते हैं पापा भी नीचे है. वो और किसी के साथ बात कर रहा है. बेटा है 4 किलोमीटर दूर. And फिर लड़कियों को क्या मम्मी? Don't disturb. I'm there only. फिर मम्मी I can't see you बेटा. मैं आपको देख सकती हूँ. आप उधर ही रहो. और रिवर्सल कैसे करते हैं हम लोग? मैंने बोला था ना 10 मिनट में आएगा. आपने बार बार डिस्टर्ब किया तो मेरा काम एक्सटेंड हो गया. मैं 2 घंटे के बाद ही आएगा. सो हियर हमारा जो विंड सिस्टम है रिवर्स हो रहा है. गोइंग बैक. आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स इट्स गोइंग बैक? ऑलमोस्ट 4.5. हमारा मानसून साउथ वेस्ट खत्म होता है और ये निकलता है. एंड कंडीशन क्या रहेगा? टेम्परेचर इन इंडिया इज लो. एंड व्हाट विल बी द प्रेशर? High. Will the wind move from high pressure to low pressure? That's why it is going back. Or purposely I made you to write land to sea. The winds are generally no moisture at all, but it is giving some rainfall and going up. And when it picks up moistures, when it crosses Bay of Bengal. You remember? So this is seasonal reversal of wind system. Please draw the map of India and show the north and southeast as it is shown in the
साउथ वेस्ट में डायग्राम नहीं बनाया हम लोग ने, प्लीज मेक इट इन द ऐसा बनाओ, या मैं भी बनाता हूँ बोर्ड में. Small one. Definitely. Then it is okay. You write land to sea, and you write dry winds, and you write low temperature and high pressure. छोटा छोटा लिखना. For writing or drawing, how much noise? And make it as NE monsoon. Correct. वही है ना? NE and repeating is same. And in exam, if they bounce you up, this is called as winter monsoon. Please write down and go to southwest. उधर लिखो summer monsoon. No problem. I could see India coming out with beautiful apps. इसको नहीं समझ. ऐसा समझिए. ऐसे पहले कैसे समझ? अभी गांधी जी का फोटो देख. But in the exam you write certain something. Normally it doesn't happen. एक अंदर की बात बता देते हैं. In board exam I heard sometimes shortage of teachers. जैसा अपना यूटी का एग्जाम होने के बाद एक मिलता है ना, what is that model answer ना? Certain teachers perfectly correct. और मैंने उससे पूछा तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? She told me I teach physics, and she is correcting SST. अभी सोचो वो मैडम आपको मार्क्स देने में कितना अच्छे से काटेगा मार्क्स. मॉडल आंसर में आंसर नहीं है, रॉन्ग. मैंने बोला मैडम वो थोड़ा अच्छा आंसर किया. आई डोंट नो, मॉडल आंसर नहीं. सॉरी टू से यूटी में भी कुछ टीचर्स लोग ऐसे ही हैं. आई एम नॉट इनटू दैट डिपार्टमेंट, करेक्शन एंड सेटिंग. तो प्लीज फील फ्री कि आपका एग्जामिनर को कुछ नहीं आता तो कुछ अच्छे से लिखो. चलिए last season, right up. I'm waiting. Cool and dry winter. In fact, this is the only batch where I'm giving all the 4 season full notes. Cool and dry winter. Vaisa. India इतना अच्छा मैंने कर दिया. इतना बड़ा जरूरत नहीं. छोड़. Let it be. Don't waste the time. Shall we? Write down point number 1. एक मिनट रुकना. क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? You both get up and say. Come out. तुम लोग दोनों भी उठो. नहीं, वो मैं बताऊंगा ना क्या करना. One, go to that last corner, that white t-shirt fellow, go to that last corner, leaving 2 benches from the girls. Antivirals उन लोग ने इंजेक्शन नहीं लिया. जा, जल्दी जा, don't waste my time. And you go to that last corner. Wait, these people are also there. 2 भाई साहब इधर. My 2 bodyguards, 2 are there. तू नहीं है, वो मैं बताऊँ. तू आ. कुछ नहीं करने के लिए बुलाया, करता तो मैं तुझे बाहर भेजता. हाँ, उसी लिए तो आता. Right. Did I say point number 1? हाँ ना. देखो ये पढ़ने वाले बच्चे का सिम्टम्स. मेरा सिम्टम्स क्या है? वायरल फीवर. Summer months. Write down point number 1. Winter in India. इधर रखना. Begins with winter in India. कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या चल रहा है? Since I'm allowing you to sit in the last benches,
एक काम कर, तू जा, तू भी बोला आज अब तुम भी जा भाई। एंड यू आर इन दैट बैग रखा है ना, उसके पहले वाला बेंच में, उसके पहले, उसके, यू अंडरस्टैंड माय हिंदी? नो नो नो, यू सिट अप, यू गो टू द लास्ट कॉर्नर, आ जा, ठीक है, आ जा तुम, ये बैग वाला बेंच में आ जा। Now if I see any symptoms of smiling and giggling, right up. What did I say? November with slanting rays of the sun. Slanting. No. Rays of the sun continuing till March. तो 9 से एक ही बात बोलता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता, कुछ करना है फिर क्यों एक गधे लोग के बीच में बैठा रहता? कौन इन तीनों में गधा कौन है, तू ही बता। हाँ, एक मिनट, मतलब तू नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट बी फाउंड इन बिटवीन देम। देखता हूँ, उसने तुझे गधा बोला सबके सामने, लेक्चर के बाद संभालो। सेकेंड पॉइंट, there is a gradual decline in temperature. There is a gradual decline in temperature from south to north with a high pressure zone, with a high pressure, gradual decline in south to north with, what did I say? Zone setting up over major parts of India. India. Next point. This helps in the beginning of northeast monsoon. आप any लिखना, capital में any लिख लो. Northeast monsoon and the eastern coast of India. Eastern coast of India. Which two states did we speak? Tamil Nadu. What do you have to write in front of Andhra Pradesh and Tamil Nadu? Coastal. Eastern parts of India receives rainfall. See, eastern coast of India receives rainfall. Next point. These winds blow from land to sea, bringing land to sea, brings in dry weather with least moisture. Least, understand? Least, less moisture. Next point. It is the South Coromandel Coast. It is the South, the spelling is right here, Coromandel Coast. Means Tamil Nadu. South Coromandel Coast. Inside the bracket you write TN and AP. No need to write the full form. Receiving the winter monsoon. Here another. Winter rainfall, winter monsoon marked by, because there are so many good habits we follow, but there are so many bad habits it doesn't leave us. What did I say? Winter monsoon
only in these regions, only in these regions. प्लीज और 2 लेक्चर के लिए अपना मेंटेन करना. अभी कुछ बच्चे ऐसे मुझे देख देख के क्या सर 90 मिनट्स का 2 लेक्चर. Relax. Did I really punish you today morning? I made you to relax. So whenever my morning lecture is there, I am not going to ask you to get up from your sleep. ठीक है? तो next time brush, toothpaste सबके साथ भी आएगा तो I don't mind it. But क्या है mentally you are अभी छुट्टी है, correct है? All schools have declared holiday. But ये जो पहला 2-3 दिन का जो pain है ना, then you becomes habit. Tomorrow also your lecture starts by 7:30. तो try to be little bit more interesting यार. इधर आके ऐसा टीचर को देखेगा क्यों आया तू मतलब. But I am not of the view. But I feel all my students are very happy to see me and attend my lectures also. Similarly, I am also correct. सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग भी हाँ ना बोलेंगे. Thank you. In other branches also I have gone in. When I was sitting there for a 9th batch lecture, some 10th ICSE. सर आप हमारा लेक्चर के लिए क्यों नहीं आया? मैंने बोला टाइम टेबल था ही नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम विदाउट मिस आने in front of the other teacher. I don't understand it. So that shows that at least they want my lecture. You also have the same. तुमने बोला था. हाँ thank you. मुझे मालूम है. तो हंगर स्ट्राइक में भी बैठ सकते हैं. इसको बैठाएंगे हंगर स्ट्राइक में. अरे बट मुद्दा क्या है वो तो पूछ मैं बताऊं. मैं वो लेक्चर के बाद उसको अकेले बताऊं. If he is ready, write down the next and the last point. अरे only when you are ready. साथ में मैं भी तो बैठूंगा. This season is referred as a transition season or transition period. Put that word into single inverted comma. Between period or season between hot rainy season and cold dry season. Underline both the words. I'll explain. Now you can relax. अभी notes नहीं दूंगा. Only will be doing from the word. And cold dry season. Sorry. Correct. Dry मतलब not the temperature, moisture नहीं. Now, how many of you know this winter in India is not cold but in fact cool? I think ये आप लोग अपना parents को बोलते हैं जब वो ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा करते हैं. What is the word you say to them? Chill, cool. इसका मतलब क्या होता है? How do they react when you say this? और तो झापड़. How about girls when you say to this to your mother? बोलते नहीं. बहुत अच्छी बच्ची है. और कोई? तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा इंडिया का जो विंटर है ना बिल्कुल आप जैसे है. पहले तो कूल. लड़का पहले ड्रेसिंग में दिखता है कूल. लड़की अपना बिहेवियर में तू कुछ भी बोल मैं ऐसे ही देखती हूँ. और सर बेचारा बोल रहा है गेट अप से द आंसर. क्यों सर क्या प्रॉब्लम है आपको? डिड यू डू द सम? कौन सा? डिड यू कंप्लीट इट? वो लड़की पूछती है क्यों? टीचर नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ही नहीं पूछता. तो आई फील वी आर ऑल कूल है. हाँ सर एसी चल तो रहा है बट उतना कूल नहीं हो. तो हमारा विंटर कोल्ड नहीं है. अभी सोचो कोल्ड का मतलब कैसे होगा. बच्चा आया तो है टाइम पर बेंच में बैठा भी है. He doesn't know which teacher is coming, what he is teaching, when he is going, coming in. वो अपने ही दुनिया में. And I really appreciate such students. क्यों? वो बच्चा बोलता है सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना. तो क्यों आप जाओ. And then कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा सर हमारा विंटर ड्राई क्यों है. So you might have seen the ads of that cold cream coming in. You know what are cold creams are? अरे इंडिया में creams नहीं बिकता है. That Pond's वाला cold cream पहला ad आएगा. क्योंकि हमारा जो skin है ना the best result. What is the best result? हमारा स्टूडेंट ने बोला सर if you draw using your nail you will see. उतना कमाता कुछ लॉस. And इमामी का एक cold cream है that is generally offered as free of cost. आप कोई भी इमामी का प्रोडक्ट रहेगा ना cold cream का वो चिपकाएगा क्योंकि कोई नहीं खरीदता उसको. Then we have this Vaseline petroleum jelly. ये सुना है? You use it? हाँ. तभी ये सब हमारा ज्योग्राफी में नहीं आएगा. But you remember why it is cool. The temperature doesn't drop drastically.
अभी मुंबई का टेम्परेचर 33 है फॉर एग्जांपल, नाउ 34 है. विंटर में इट विल नॉट कम 21. कभी आया? It might come close to 30, 26, 27, maybe 25 or 24. उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा. But I've gone into some interior parts of Maharashtra, Satara and Sangli. The temperatures are as cold as 15 to 16 degree. And I went with my college staff where I was to work, and I could see the local people out there are all cricket fans. पहले तो उनका मराठी मुझे 2 दिन समझ में नहीं आया. मराठी मैं भी थोड़ा बहुत बात करता हूँ, पर सातारा मराठी इज टोटली डिफरेंट. मुझे इतना समझ में आता है, वो लोग मुझे बाहू बोलता था या तो सर बोलता था. तो फिर उनके साथ खेला. बट द विंटर इज सो सिवियर, यू विल फील मुंबई का विंटर 10 गुना बेटर है. देन द लास्ट एंड द वन लाइन, आई वेंट टू नासिक टू शिरडी. इट वाज एसी लग्जरियस बस. मेरा दोस्त लोग जो भी था सब महाराष्ट्र थे. सर आप अपना विंटर जैकेट ले लेना. मैं टोरंटो का विंटर देख रही हूँ, ये विंटर क्या करे. 4:30 they dropped us exactly in Shirdi, early morning, and I was just coming down with my small bag out of the AC bus. I told you na, I went quickly back saying कि ये temperature में मैं नहीं उतरेगा. Nashik was that day, it was 7 or 9 degree, and perfectly मेरा जो गली का रूम डाला उसमें गर्म पानी भी नहीं. तो हमारा वो जो बंदा आया, सर डोंट वरी सर, मैं बकेट भर भर के लाऊंगा. पहले ये स्नान करते समय बीच में कहाँ से बकेट लाया? डोंट वरी सर, हम ऐसे ही सर्विस करते हैं. पर देन वी चेंज द रूम टू अंडरस्टैंड. तो जब भी मैं कूल विंटर्स बोलता हूँ ना, आई थिंक महाराष्ट्र इज फार बेटर. देन यू गो टू चंडीगढ़, देन यू गो टू यूपी. वहाँ इतना दूर जा रहा है, केजरीवाल का जगह पर जाओ, दिल्ली. ट्रेन्स आर कैंसल, फ्लाइट्स आर कैंसल, and school will start 2 hours late in the morning, because of the winter. And बच्चा बोलता है वाह ये सीजन बहुत जरूरी है. Why? The days are shorter and nights are longer. And अभी कौन सा बच्चा बोलता है कि मैं नाइट में पढ़ाई नहीं करता? ऐसे पढ़ाई नहीं करता, सब चुपचाप सो जाता. 12 घंटे का रात. We always believe this winter is very good for a country like India. Why? Because India grows something called as flowers of different variety. And let me tell you, Indian roses are demanded all over Europe. No doubt we use sunflower oil maximum now. Correct है? Because groundnut वो पहला महंगा हुआ. फिर parachute. Sir, parachute का cooking का क्या संबंध है? You go to any Keralite's house, I think Mumbai में वो लोग coconut oil use नहीं करते हैं. But you go to Kerala, they will use coconut oil only. और तुरंत वो सब्जी अपने सामने, सर ये क्या है, कुछ नया बदबू, क्योंकि हमको सनफ्लावर में खाने का. बट टू बी वेरी फ्रैंक, कोकोनट ऑयल इज बेस्ट फॉर योर हार्ट. सो उसका लीटर कितना दाम देगा क्या? इमेजिन वी यूज 10 liters ऑफ कुकिंग ऑयल इन अ मंथ, मल्टीप्लाइड बाय सो मेनी zeros ऑफ द कोकोनट ऑयल. हमारे घर में कभी कभी मेरा मॉम पैराशूट लेके डालती है पैन में. बोलते ये क्या है, सर का तेल तुम उधर डाल. नहीं, शुद्ध है, शुद्ध. Don't you the people who laugh, parachute को cooking में use करता है और सरसों का तेल सर में लगता है. So when I say the word cool, I feel it's very simple. Enjoy the climate, flowering season, fruits are coming in. If you have next time visit with your family members to Kashmir, the Himachal area is considered to be one of the best seasons. Ye season, the orchard farms. Next time you buy apples or you are a big fan of apple, you could find Washington apples are cheaper, Himachal apples are costly. फिर मैं एप्पल वाले से पूछता, ये तो अमेरिका से आता है और ये तो इधर से आता है, इंडिया से. बट वो मालूम नहीं, सर वॉशिंगटन सस्ता है. लो सर. एंड अमेरिकन फ्रॉम देयर, हमारा पूरा कचरा हम इंडिया भेजता है. बोले कौन सा कचरा? फ्रूट्स जो हम नहीं खाते. और हम लोग ग्रीन एप्पल के पीछे भी पड़ा है. यू नो सर ग्रीन एप्पल, बट दे से हिमाचल एप्पल इज मोर न्यूट्रिशियस देन एनी अदर. सर महंगा है. देन चाइना के तरह प्लास्टिक का राइस बनाया, प्लास्टिक का एग बनाया, बट फिर उसे ऑमलेट कैसा बनाया मुझे नहीं पता. आउट ऑफ द नॉर्मल राइस दे हैव एडेड सम सिंथेटिक राइस. अभी वो लोग सिंथेटिक रेनफॉल भी बनाया है, मैन मेड रेनफॉल. हाँ, और आगे जाके बोल रहे हम लोग सनलाइट भी मैन मेड बनाएंगे. बोला अरे छोड़ दे भाई, छोड़ दे, कुछ प्लेनेट को तो छोड़. बट चाइनीज आर चाइनीज, है ना. कोरोना को क्या वो लोग ने आगे बढ़ा. I feel that was the time all my students were very happy. सर को कोरोना हो गया, जिंदा है क्या? So sad यार.
मतलब मर गया, अरे यार वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। मतलब मरने के बाद उसका मुंह से कैसा उड़ाता है, आई वॉज थिंकिंग टू मीट हिम, गॉड ब्लेस। फिर अंदर से बोलते पार्टी कर जाया खड़ूस। फिर अगर मैं बच गया, हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपको कोरोना हुआ ना सर। सर फिर कैसा रहा सर, आप बच कैसे गए, मतलब क्या। अगर और कोई बीमार है, some students come to the hospital and they are talking to my doctors and I'm very happy, moved by the emotions of my students. और डॉक्टर आके बोलता आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, उन्होंने बोला 2 हफ्ता एडमिट करो। उधर आके हमारा सर पे नाचता। तो we always believe the school season for you only. तो आपको समर सीजन पसंद नहीं है ना, रेनफॉल तो छुट्टी मिलना ही मिलना है अभी जो आएगा। And winter season is one season is a transition. Why they call the word transition? Correct. It is in between. अभी मेरे कुछ 12 के स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं अडल्ट है क्या टीनेजर है। तो ये मेरे से क्यों पूछ रहा, मम्मी से पूछ। सर वो क्या है ना, जब तक 19 लगता है मैं टीनेजर है, 20 होते मैं अडल्ट है। उन्होंने कल तो तू वो मूवी क्यों तो दिखाई दिया, अच्छा आपने देख लिया सर। सर आप क्या कर रहे थे, अरे मैं तो अडल्ट ही है ना भाई मैं। सर वो क्या है ना, अडल्ट का मूवी का डेफिनेशन हम लोग अलग रखा है, उन्होंने क्या रखा है, अडल्ट नहीं जाने का ओनली बच्चे लोग। बट डू यू थिंक दैट फेलो लीव्स यू, पहला प्रूफ दिखाओ प्रूफ, लड़का छोड़ो ना अंकल ऊपर से पैसा देता हूँ, आप क्यों टेंशन लेते हैं। So when I use the word teenager, you are the transition. You understand transition? Neither you are adult nor you are children. फिर क्या है, शैतान की पूरी है। हमारे कुछ 9th में मुझे अभी भी याद है, they love me so much, मुझे इधर से देखते उधर से भाग जाएंगे, फिर बोलेंगे आया आया और बोल बोल के भाग रहा। I love it कि मेरा बच्चा मेरे से देख के कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे चल रहा है, इतना आगे गया मुझे छोड़ के घर भी चले गए। So we always believe the school season you never forget it. Why? Good for sericulture. नहीं, good for horticulture. What is horticulture? Fruits, flowers. Good for you and me. Why? Sir, ये cool है sir. अबे जब ये जो scorching heat है ना, I feel every student feel like sleeping. हाँ, कर लो। Despite all the ACs working, वो काम नहीं कर रहा है, उसको on करो, वो on करना। We always believe this is a season which is only रहने चालू कर, वैसे भी किधर जाता है। So we always believe this season is very important for a country like India. Okay, so everyone turn to page number, first page number 75. This chapter main topics are all done. We will be doing all this in a very nutshell manner. Understood? Keep a pencil ready. I am reading the introduction. I will be going a little bit fast so that we can complete 75. India underline tropical monsoon climate. Did I explain in my first lecture? Yes. Thank you. Next one. It is influenced by underline monsoon winds. उसके नीचे लिखना SW. What is SW? Main characteristics. Put into bracket. High temperature and dry winter. Dry winter के नीचे लिखो no moisture. Next, due to vastness, underline variety of relief. उसके ऊपर लिखो relief के mountains, plateaus and plains. Pull that curtain. So I think it will make you. Better. अच्छा आप लोग करो. Next, the coastal areas underline equable. उधर लिखो moderate. Equable की जगह पर लिखो moderate. Moderate. इसी के पास भी वॉल्यूम नहीं है. Next. I'm going to distribution. Underline the first few words. Seasonal variations. Why they use the word seasonal variations? The temperature is not uniform. Do we have the highest temperature in India? Yes. Do we have the lowest temperature? What is the lowest temperature place? अरे I'm asking the name. ये मैंने last lecture में भी बोला था, तो Did I say Kargil?
Kargil is minus 40 degree throughout the year. Generally 6 महीने तक ऐसे ही डिग्री रहता है. चलो, underline Barmar in Rajasthan, put into bracket 48 to 50. पहलगाम और गुलमर्ग, underline hardly 22 degree. ये उनका highest है पहलगाम का, and it's one of the area where terrorists are very active. अभी थोड़ा सा मैंने सुना है, I haven't gone that. Underline next Kargil. Kargil underline minus 40. Put the bracket December. Kerala underline 20 to 22 in same month. I'll tell you, for Kerala normally it is very hot summer season. Winter season also the temperature doesn't drop. And lot of perspiration. You understand what a perspiration? Because generally Kerala is known for its rainfall. Anyone have visited during rainfall? It rains heavily. And ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन, continuously. Having some interior parts where they dug the place for wells. And it is so easy, you are inside the one well. But हमारा कोई भी channel cover करने भी नहीं आता. आप बाहर से अंदर आया या अंदर से सीधा ऊपर चले. Because you are come to know after 2 days only whether you are inside that well. So it's very good rainfall, but a little bit dangerous. And maximum snakes are found in Kerala. Have you heard about the king cobra variety? Mainly in Kerala. Okay, let's proceed. Kerala underline tropical, Punjab underline continental. You connect that continental climate, Punjab. Udhar likh lo, seriously cold or severe cold, Punjab. Now we come to distribution. Next page. Heavy rainfall ke liye put number 1, moderate for 2, low rainfall 3, and scanty for 4. In exam they will ask you this, so you have to put the rainfall in bracket. Heavy ke liye 200 centimeter bracket mein डाल दो. Moderate ke liye 100 to 200, low ke liye 50 to 100, scanty less than 50. Now let's start with scanty only. Underline Rajasthan and J&K. Underline rain shadow Western Ghats. Please put a question mark over J&K. Why Jammu Kashmir gets the scantiest rainfall? It's about what? Very good. You write snowfall more, rainfall come here. And I don't know if you have visited this Jammu and Kashmir. Jammu is exactly like Mumbai. It's very hot and humid. Only Kashmir is different. अभी अगर आपने ये आर्टिकल 370 के बाद मैप देखा है, they have made the map like this. अभी ये जो बड़ा पार्ट है ना, this is this one, Ladakh. And that small J and K ऐसा डाला रहेगा, अलग-अलग है, ऐसा something. Now for the first time, if the elections are going to held, maybe I don't know which year, the state, it will get a statehood, and Ladakh is the biggest. वरना अभी तक लोग ने क्या किया, जम्मू कश्मीर को बड़ा दिखाया, लद्दाख को बहुत छोटा दिखाया. And if you remember your 9th standard, now also I'll tell, this land gets the name from a saint called Haranyakshap. वहां से ये कश्मीर नाम आया. And to be very frank, 95% population were Hindus that time. But how? Nobody knows. These Hindus were, you understand what I'm saying? And there are many foreign travelers, history में उनका नाम है, who have come and met this Hiranyakashap, and he used to give lectures of high thinking. That's why Kashmir is even today is called as a land of knowledge. And after that also, the Maharaja who was heading this place, he told to the government of India that my people will not be given any disappropriate treatment. That's why he called for a special. Special का मतलब क्या रहेगा? 90% of the revenue central government देगा. They had their own national flag, their own national anthem, and their own CM or PM. I don't want to name some people in UT also, we had it from there. उनका मुंह से ही सुनता था मैं, तुम्हारा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा इंडिया, तो मतलब तू कहाँ से आया? देखो उनका माइंड में इन लोग ने पहले से ही डाल दिया. Are you understanding what I'm saying? So I'm little bit going away from geography but politics. But now there is a famous place in Jammu and Kashmir. आप जब भी जाएगा जाना. It's called as Lal Chowk, the main shopping area. वो movie में भी उन लोग ने दिखाया लाल चौक.
और लाल चौक में कभी हमारा ट्राई कलर फ्लैग लोग ने लगाने दिया ही नहीं. But for the last 2 Independence Day, now the Lal Chowk they go for it. जो भी national anthem गाया है उसको 2 या 3 दिन के बाद. So these were the terrorist activity going on in Jammu and Kashmir. But now at least you have the courage to go. You can visit any and every part of Jammu. And to be very frank, they say this is a land of heaven. The houseboats and certain interior parts are so beautiful. आप ये जो winter में बोल रहा था ना, आप कभी जाना उधर houseboats में travel करना. You will really enjoy what India is. No need to go to Switzerland or any other country. ये कश्मीर हमारे लिए उतना ही अच्छा है जितना कोई foreign country. And even the local people want you tourists to come there. उसी से उनको income मिलता है. But this tourism has been hampered by this killing. There was a boy from Chennai, I think last year, he was an IT engineer. He had gone to there, some people have beaten him to the death. And they were terrorists. And his body was hanged. Look, why they are doing all this? They don't want Kashmir coming back to the normalcy. I mean, G20, everybody knows, is the summit going on in India. 2 weeks before, there was an accident. Not an accident. 4 Jawans were killed. एंड इंडिया का टॉप मोस्ट लीडर नहीं है, मिलिट्री पर्सन ने बोला ये G20 समिट खत्म होने दो, पाकिस्तान को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कसम, ये 4 जवान का हम आपसे कैसा बदला लेते हैं सोचो. तो उसी दिन से फिर हमारा पाकिस्तान पीटीवी न्यूज चैनल चालू हो गया कि हमारे साथ ये लोग क्या करेंगे, मारेंगे या छोड़ेंगे. बट इंडिया इज सेइंग ओनली वन थिंग, देखो आप अपना साइड का कश्मीर को संभालो, अल्लाह वास्तु लो. और जब से ये आर्टिकल आता है, द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट हैज कम फ्रॉम दैट कंट्री जो अपने आप को मुस्लिम का सबसे बड़ा ये बोलता है, एंड दैट इज अबू धाबी. यूएई ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, विच पाकिस्तान डिड नॉट लाइक. अभी सऊदी अरेबिया भी आ रहा है इधर इन्वेस्ट करने. दे आर सेइंग कि वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिंदूज और मुस्लिम्स, बट कश्मीर इज अ रिच लैंड. अभी ये जो सिलिकॉन का कुछ चिप्स बनता है ना, उधर वो भी मिला है. बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो निकालेगा. नेक्स्ट 15 इयर्स तक सिलिकॉन वहां से मिलेगा. दिस इज आवर लैंड ऑफ. एंड इफ यू हैव गॉन टू दैट 2 श्राइन्स, है ना, वन शिवलिंग व्हिच कम्स इन द विंटर, वो कौन सा शिवलिंग है, फाइंड आउट करना. दैट हैज बीन कॉइन्ड आउट बाय अ मुस्लिम फैमिली ओनली. एंड आज भी केदारनाथ, आज भी उस शिवलिंग का वो मुस्लिम फैमिली पूरा देख रेख करता है. And they want people to understand. And उस family को पहला rights मिलता है. Only army takes care of it, but उन family को allowed है, they can go near to. So this is Kashmir. And now Kashmir is coming back to normalcy. And we want Kashmir to get the same what you and me are getting. अभी आप उधर जा सकता है, land भी खरीद सकता है, घर भी खरीद सकता है, and you can settle if you want. पहला that was not allowed. I don't understand what I'm taking you from. So this is our country. So Jammu and Kashmir, many people are saying, ये भी बोल देता हूँ, this part till today is not with India. Similarly, ये तो चाइना के पास है. तो हमारा मैप को अगर मैं ऐसा दिखाएगा तो कितना गंदा दिखता है. It's only for the geographical appearance we are taking this. This is POK, Pakistan occupied Kashmir. This is Siachen. And government of India ने बोला ये दोनों हम लेंगे. पीओके तो मेरे ख्याल से और 2 साल में अपने आप एनेक्स हो जाएगा, इंडिया को वॉर नहीं फाइट करना पड़ेगा. बट विद चाइना वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा. एंड इंडिया इज स्लोली एंड स्टेडीली डूइंग विद चाइना आल्सो. Yesterday only Rajnath Singh, you know who is he, the defense minister, have given a strict warning to Chinese. We are going to disrespect the policy which was signed Mrs. Indira Gandhi. No first bullet. अभी से कोई मार्च परेड भी नहीं होगा, कोई वॉक भी नहीं होगा. अगर आप लोग ने हमको मजबूर किया, we might use the bullets also. It's a big statement given by Indian defense minister. And China दिखता है बड़ा और है सचमुच बड़ा. उनका आर्मी को हम लोग PLA बोलते हैं. Any idea what is this? It is not an army which is have an experience like India. आज तक चाइना का आर्मी ने कोई बड़ा वॉर नहीं किया. वो सिर्फ धमकाने का आदत है उनकी. जैसे आपका बिल्डिंग में कोई लड़का आपसे जरा टॉल है या थोड़ा वेल बिल्ट है ना, आप उसको उठा के क्या बोलते हैं नीचे डाल सकते हैं, बट ही विल विद अ साइज, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा. ये चाइना इज लाइक दैट.
इंडिया चुपचाप बैठा है, जब भी मौका मिलेगा राफेल्स अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है. We have got S-400 from Russia. Anybody knows what is S-400? Yes, I. Just remind me in my next lecture. I'll tell you the details. It's from Russia. It is one of the strongest defense system in the world. अमेरिका के पास भी नहीं है. और इंडिया ने 2 बैटरी लगाया है चाइना के तरफ और 2 बैटरी पाकिस्तान के तरफ. मतलब 400 किलोमीटर पहले ही the missile and the aeroplane can be killed by these rockets. ब्राह्मोस तो हमारा खुद का है, ये तो रशिया का है. रशिया और इंडिया का ही. हाँ, वो तो इनिशियली लोग ने काम किया. Are you understanding? Shall we go ahead? Is it interesting news? Yes. Thank you for listening patiently. Let us go to scanty होने के बाद low rainfall, underline Deccan Plateau, Karnataka, AP and Tamil Nadu. What will you write about AP and Tamil Nadu? Northeast. Good boy. Northeast. Southwest कहाँ से है? Let us go down. Underline Rajasthan, Punjab and Haryana and Kashmir. Then go to moderate. Underline Bihar, West Bengal, Assam and Purvanchal. Purvanchal के नीचे लिखो foot hills. वो हिमालय का foot hills है. Purvanchal. Let us come to high rainfall or heavy Western Ghats, Assam, Meghalaya, Himalayas, AP and West Bengal. मेघालय के ऊपर कौन सा जगह का नाम लिखेगा? Highest rainfall. Please everybody write. I'm explaining how does Mausinran gets the highest rainfall. If you see the map of India, especially this Khasi Garo, towards the Meghalaya they might have shown. कोई तो एक map में है. Just understand this. So I can say these are 3 hills which are responsible for. And Jainita. Geographers ने क्या बोला है? When you look at these 3 range of mountain, more or less उनका ऐसा है valley setting. ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ऐसा. If any clouds enters into this area, are they block the cloud? They cannot escape out. So all the rainfall has to shed it in that same place. So I can mention it as Khasi, Garo and Jainta. So whenever we say highest rainfall in Mount Simran, we say something this much rainfall. Annual, huh? I'm so sorry. Sorry. It is 1210, I'll say 1200. And you remember when Mumbai was deep into water, we experienced only this much rainfall. Yes, all thanks to the gutters of India, which are there in Mumbai. That day, Arabian Sea was experiencing the highest of the high tide. You understand what is highest of the high tide? We say spring tide. मुझे लगता है कि अगर 1200 का अगर आधा सेंटीमीटर भी अगर मुंबई में गिरा, then we are deep into the water board. Because Mumbai is very close to coastal. And I don't know how many have visited that Mumbai Devi in deep in Kolaba area. Because of that, that god only we have got the name Mumbai. And बोला जाता है कि अभी तक ऐसा कोई flood नहीं आया. But वो flood ने हमको सिखा दिया that it can be dangerous to Mumbai. And all thanks to the extension of Mumbai deep into waters. Have you visited this Ulve area? Yes. Now they are saying that a new sea link is starting. अंधेरी से होते हुए start हो गया. हाँ, मुझे कुछ 2 जन मुझे कल मिला था and they were saying कि many people purchased Ulve flat for 2 reasons. Near to the airport. But मुझे ऐसा लग रहा है कि near to the airport से हमारा क्या लेना है? Are we going to take flight to different parts of India to travel? नहीं सर, साल में 1-2 बार जाएंगे. But let the flight start. You will not get your mobile network. Ooh, that's very bad. Noise pollution, that's going to. And it is going to be a real cruel some punishment staying near to international airport. But then Ulve has been developed on that. अभी ये वो आ रहा है, sea link आ रहा है. Let it be, the land will be, captured mainly for that big trucks. जो आपको ये बेलापुर एरिया में दिखता है, उरन का बड़ा ट्रक्स, अभी से जो उल्वे पीपल ऑलरेडी वेकेट कर रहा है. अच्छा, ये रीजन भी है. सर फिर बोलते हैं मम्मी को, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ. It is going to be get flooded with traffics, but उल्वे है. So that's why whenever we talk about these rainfall regions, the rain has to be getting easy way to the sea. You go to Andaman, Port Blair especially, heavy rainfall, 9 months को मिलता है.
but never I've seen flooding. छोटा छोटा area है, island ही है, it easily goes and joins the Bay of Bengal. But मुंबई में एक तो गटर जितना बड़ा, उससे भी ज्यादा हमारा deposits उतना बड़ा. Deposits किसका ज्यादा रहता है? Plastics का. Have you seen अभी मुंबई पूरा गटर का सामान पूरा बाहर उठा के डाला, and it will be smelly for the next few weeks. And हम पार्किंग करते से हमारा vehicle उसी के अंदर. फिर हमारा मुंबई का मेयर, she is a lady, I don't know. Every time she releases in the Marathi newspaper, we are prepared for the monsoon. 2 दिन rainfall, all are deep in water. Maybe आगे जाके steamboat या छोटा छोटा boat मिलेगा. City of Venice. Have you seen City of Venice in the videos? So this is Mumbai, beautiful Amchi Mumbai. Shall we go ahead? Chaliye. Let us come to the last part of the chapter. That's factors affecting. Put this heading in your notebook. I'll give one line for each. That will end up one more small para. Copy down the points as it is. Factors affecting climate of India. You write latitude and wait for me. I'm giving. Shall I? Tropic of Cancer. Latitude ka explanation. Tropic of Cancer passes through the central part of India. Tropic of Cancer, TOC will accept that. Of Cancer passes through the central part of India, experiencing tropical and subtropical climate. Tropic of Cancer passes through the central part of India, experiencing tropical or subtropical climate. Second point, or subtropical climate. Influence of Himalayas. It acts as AS. A huge climatic divide. It acts as a huge climatic divide. Divide. Put it into single inverted comma. Continue. Obstructs the severe cold winds. It obstructs. Careful with the spelling. It obstructs. This is the word. Severe cold winds from Tibet. Encouraging agricultural production of Punjab. Encouraging the agricultural production of Punjab. Production in Punjab at the same time. Responsible for obstructing at the same time, responsible for obstructing rain-bearing clouds. Did I explain this? Rain-bearing clouds. Bracket mein which monsoon? Bearing, BE, southwest. Next point. You write altitude. All guys are tired of writing? बस ये last है. Altitude. So much involved in my lectures. With increase in altitude, there is अच्छा नहीं क्या है ये क्या है hairstyle? Some cock is sitting in front of your head.
with increase in altitude, comma, there is decrease in temperature. Especially decrease in altitude, there is increase in altitude, there is decrease in temperature, especially hill stations like Ooty, double O T Y R. Despite close to the equator, despite DE, don't write DI, close to the equator, experiences low temperature, or has low temperature. Despite close to the equator, experiences low temperature. Bracket में डालना GR. Exam they will ask you give reason. So what? Yeah. The next point, give reason. ये पूछा लास्ट में। अच्छा मेरे आप लोग बात कर लें? So I won't read now. I'll tell others people to read. चलेगा? So who are volunteering for reading? कर ले भाई, कर ले. और दो लेक्चर में फिर फ्लैट रहेगा. बेंच के नीचे सो जा. Come on, let's start with her. What's her name? Come on, Jerry. अच्छा. Tom and Jerry can't say. She's reading surface winds for me. Now I see anybody giggling, tussling. Then I'll see now. Come on, Manjuri. Underline the word abundant. How do you explain the word abundant? Heavy. Lots of rainfall. Go ahead. Manjari को पढ़ना नहीं है. बस loudly पढ़ना. Are you able to hear her voice? तो तू पढ़. चलो, you stand up. Where's the volume? I asked you to get the volume between the break. तूने हाँ बोला था. क्या किया? मुझे क्या मालूम? Shall I send you out of my class? उसको volume दे दो. No, you keep it. Loudly up till here and up till that history lecture room should go. Your voice. Come again. अरे रुक, वो भाई साहब अभी आ रहा. Come on. Monsoon winds cause abundant rainfall in the Indian subcontinent. Winds blowing in from the northwest during the winter cause cold waves in northern India. Thank you. Just wait. Underline the word cold waves. Do we experience cold waves in North India? Yes. Especially this UP and Delhi. Delhi तो मैं बार-बार बोलता हूँ. Even UP gets severe cold temperature. Go ahead. During summer, hot and dry winds sweep over the northern plains. Underline the word hot and dry. LW. Go ahead. Sweep over the northern plains of India, causing a phenomenal increase in temperature. Underline the word phenomenal. You write great. Do you think India ने दोनों देखा है? Fall in temperature as well as rise in temperature. Go ahead. During winter, the monsoons retreat and bring rain only to certain parts of the Tamil Nadu. Only underline the word retreat. What is the word you have to write? N.E. What is N.E? Very good. Go ahead. Sit down if you are tired. Sit down. Read. Western disturbances. During winter, there is low pressure depression called western disturbance. Only underline the word low pressure depressions. If you have seen any map of India, they might have shown, I think map है उधर, they might have arrows like this. और उधर लिखा रहेगा western. Very simple. It is not the west of India. It is the west of the globe. And these winds come up, either they bring clouds with them or they take away the clouds from India. Yeah, सिर्फ J&K नहीं है. Northern part में blow होता है. Carry on. Why is the word disturbance? Because normal climate को ये disturb करता है. As if you are studying very studiously at your home and your father is turning on the TV. मैंने सुना नहीं है, ऐसे नहीं, उल्टा होता है. Dad is doing some busy work, we only disturb it. ऐसा है?
अच्छा ठीक है, western disturbance. Go ahead. The rainfall in the northern states such as Punjab and Haryana Underline that. 2 states and rainfall. is due to the western disturbances or the cyclones which originate over the Mediterranean Sea. Underline cyclone and underline Mediterranean. Jet streams. The air Put a currents star mark. Separate question comes. What are jet streams? The word is jet because ये wind का speed बहुत ज़्यादा है. 25 nautical miles, 10 to 15 kilometer per hour का speed में जाता है. In fact, certain jet people, the pilot, if they get the wind during the season, they try to put the plane in that same direction. ऐसा नहीं कि plane का engine off नहीं करेगा. It will save the fuel of the plane. If you are cycles चलाते हैं ना, both guys and girls, if you are trying to bicycle your area, if it is against the wind, you need to understand. But if the wind is behind you, you just need to relax. Wind will take you. So this is jet stream, and this is one good thing for India. Pilot के लिए ये reason है, and for other it can bring some chilling effect to India also. Carry on. The air currents or jet streams in the upper layer of the atmosphere are very to determine the arrival and departure of the monsoon. Underline arrival and departure. Go ahead. However, research is going on to study the extent to which monsoons may be affected by these air. Underline monsoons affected by the aircraft. उधर लिख लो. Saves the fuel. I don't know how many of you know there is one solar airplane has been done. अभी तक इंडिया में नहीं आया है. And once Air India flight has gone full flight, it's on non-conventional fuel. मतलब वो क्या बोलता है? Eco-friendly fuel. Biofuel. And now they are testing cars which are going to run on hydrogen gas. Actually, hydrogen नहीं है. It is combustible है. But उसको किसी के साथ IOS बोलता है. I've got a video where our Nitin Gadkari Sahab is coming from that cars. ये जो EV का जो अभी फैशन चल रहा है, EV might be a great blunder after 20 years down the line. Why? The batteries that we are using to charge our vehicle, वो बोलते हैं उसको dispose करने में environment का जितना अभी तकलीफ नहीं रहा उससे 10 गुना ज़्यादा. Are you understanding what I'm saying? So EVs are the talk of the town now. Even now we have two-wheelers which are of EV type. There's one Komako or Komiyako, I don't know what's that. They have got 350cc engine. It's a biker with rowing type. But वो बोलता है कि इतना घटिया है उसका spare parts. When we start the engine, मैंने अभी तक टेस्ट राइड नहीं लिया. That exhaust pipe के ऊपर भी बल्ब जलता है. मुझे तो टेंशन आता है ये क्या बाइक है या कुछ LED लगा है हर जगह. So now we have Ola. That's the I heard the largest selling bikes, is it? But it is very costly. Ola bike is very costly. Close to 2 lakhs, 1.35 का हाँ. But tax वगैरह लगा के 2 lakh. I could see some of when I'm riding with my bike and my friends, the Ola people are trying to trespass left and right. एक बार मैंने बोला आराम से ले, बैटरी का वायर टूट गया ना, तो बीचों बीच हम तुझे क्रश करके आगे निकलेगा. क्योंकि है ही तू सब देखा है. But Ola is considered to be one of the revolution because they have not only made the bikes, अभी बहुत जल्दी they are going to make docking station as well. And Australia is the first country which has stopped all EV docking stations. Australia देखो हमसे 20 गुना आगे है. बोलते हैं हम docking station निकाल रहे हैं. Because जैसे जैसे EV का नंबर बढ़ रहा है, there might be a great tension. I feel with one of my friend, he is also a teacher somewhere in I don't know the name of the school in Nerul only. वो बोलता है नहीं अलगेश ऐसा नहीं होगा. मैं बोलता होगा. So India is now stepping up for EV, but I feel आगे जाके EV will be a tension. But we have this NMMC buses, is it? They are quite luxury मैंने देखा है, and quite AC भी ठीक है, strong नहीं है, but ठीक है, वो चलेगा. You are taking 20 to 50 people in a EV, you are going to save it. अभी electric bike भी इतना आ गया है, imagine how many. There is one test drive लिया मैंने Ather करके एक brand है. That is also costly. In Nerul only I picked. जैसे मैंने वो छोड़ा उससे बात किया, वो टेक्निकल बंदा बैठा था. हाँ सर कभी बुकिंग कर रहा है. मतलब बुकिंग छोड़ो, ये कब इंजन स्टार्ट होता है कब बंद होता है मालूम ही नहीं. There is no noise at all. हाँ, एंड ब्रेक ऐसा लगता कि जैसे कि मैं उड़ के उसके ऊपर गिरेगा. मुझे अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि नहीं, बट इट इज अ रियल टेंशन.
And sorry to say, some ladies are great fancy of this electronic bikes. और हमारे सामने आप टेंशन लेके नहीं, हमको डर लगता है क्योंकि कब इसका ब्रेक लगता है ना, it's very quick and suddenly it stops. So we say India has come up with many new programs. अभी बुलेट ट्रेन का बारे में उस दिन वो ICSE को बता रहा था. And every student of mine, sir, कब आएगा? Government of India ने 2036 दिया है. So by the time you might be in your 20s or 21st, I do not know. That time the first bullet train is going to run between Mumbai to Ahmedabad. But then ये जो मेट्रो आया है या आने वाला है नवी मुंबई में, खारघर आप जाएंगे तो पहला वो मेट्रो का वो रूट ही दिखता है. पिछले मैंने 2 साल से सुना है कि 1 जनवरी में स्टार्ट हो रहा है. अभी 1 जनवरी चले गया, अभी पेंटिंग चालू है और स्टेशन का नाम भी रख दिया. एक तो आरबीआई आज से कुछ भी आरबीआई कॉलोनी है, फिर और भी कुछ है. बट लेट मी सी दिस मेट्रो कैन reduce नवी मुंबई ट्रैफिक ऑन अ लार्ज स्केल. वन, इट इज वेरी क्विक, थोड़ा महंगा भी है, बट इट इज यू पीपल से मेट्रो आ गया है. बट मेट्रो आने से हमारा क्या लेना है? बच्चा तो अपना स्कूल बस में वो खटा फूटा बस में बैठा है. एंड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स से सर हमको 7 बजे उठाता है हमारा बिल्डिंग से और 7:30 बजे तक पूरा नवी मुंबई घुमाता है और तब तक बच्चा पूरा नींद में भी. हाँ स्कूल आया, हाँ क्यों आया, और एक आधा घंटा घुमा. Nobody says I'm saying this. So this is what we are slowly transforming. And let me tell you, the climate is going through serious trouble. अभी ये जो मानसून है ना, many people are saying it can be the heaviest part अगर हुआ तो, or it can be the driest part अगर नहीं हुआ. We do not know. So let's, I think we are there going to be in the month of June. Let's hope कि monsoon good रहेगा. Yes boy, start. Monsoon and its mechanism. Now if I want to explain the mechanism, he is going to read. I'll tell it in a very simple. आप लोग अपना घर से बाहर भागने का एक मैकेनिज्म रखा रहता है. पहला मेरा फ्रेंड ने बुलाया, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, तीसरा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, चौथा ग्रुप स्टडी. मतलब ये चारों रीजन रॉन्ग है और ही कुछ है, बट मम्मी को कैसा एक मैकेनिज्म में डालता है. फिर अगर मम्मी का फोन आ गया या पापा का फोन आ गया, उसके लिए भी लोग का सेटिंग चालू रहता है. हम लोग अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में, डोंट डिस्टर्ब. ये वाला उसने ऑलरेडी एयरप्लेन मोड में डाल दिया. सो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मैकेनिज्म, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलने के लिए ज्यादा ब्रेन यूज करना पड़ता है. सच से भी ज्यादा सच लगता है झूठ. बट एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरा बार मम्मी डायरेक्टली उस रूम में आ जाते जहां आप लोग बैठ के गपशप चालू है. व्हाट डज इट मीन? योर मैकेनिज्म हैज फेल्ड. देन बच्चा नया मैकेनिज्म पे जाता. सो व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड मानसून, इट फॉलोज अ टिपिकल मैकेनिज्म. मतलब जब मैंने बोला साउथ वेस्ट, all farmers of India get ready for what? The monsoon. Is it going to give to all part of India? अभी महाराष्ट्र में how many have gone to a place called Vidarbha? That's considered to be the driest part of Maharashtra. Forget about rainfall. People do not get water to drink, and every year it's a trouble. But Vidarbha ही है. Neither the Maharashtra, neither farmers, nor the government as a typical. Then you come down to other part, especially Malvan, जो अभी पनवेल से रूट देखा है ना, कोंकण, that gets the heaviest rainfall. अगर आप जब भी मानसून में अगर कोंकण रेलवे जाएगा ना, 90% of the time the trains are closed. One, the route is like that. Second, landslides and heavy rainfall. And then you go to Rajasthan, the place I recently visited. I could see it was good rainfall there, and climate was very cool. When I landed in Mumbai airport, it was very hot. मैं बोला राजस्थान अच्छा लगा. Mumbai was very hot. All global warming. Are you understanding? हमारा मानसून एक मैकेनिज्म फॉलो करता है. Starts in the month of June, ends in the month of September. Let's study what is its mechanism. Quick. Monsoons are periodic seasonal. Underline that word and write point number 1. Periodic seasonal winds. They develop because of differential heating as well as cooling of the land. Underline that word, differential heating and cooling. ये कौन सा ब्रीज का बात हो रहा है? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज दोनों. आगे. They are divided into 2 phases. The summer monsoon and the winter monsoon. Everybody underline. Under summer monsoon you write SW. Under winter monsoon you write NE. अभी ये जितना पॉइंट्स मैंने दिया, बाकी पॉइंट्स आपको खुद लिखना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. That I will check it in my next lecture.
Go ahead. Summer monsoon. Ah. They blow during summer season. They blow from sea to land. You keep marking. I'm not going to say. Let him read. Their direction is southwest. They bring rainfall in most parts of the Indian subcontinent. Okay, next. Winter monsoon. They blow during winter season. They blow from land to sea. Their direction is northeast. They bring rainfall to the Coromandel coastline. Okay, underline the word Coromandel, PNNAP below. Now go to the question answers page where any of the questions you feel you want me to give, I am ready. And please remind me in my next lectures we will do more numericals, है ना? क्योंकि ये 7:30 आते हैं आप लोग ऐसा देखता है मुझे तो एक दो न्यूमेरिकल उस दिन भी करेंगे. हाँ, पेज नंबर कहाँ है? Where we have this worksheet question answer 83 है. Let me see the next chapter with me. You know there are certain chapters with certain teachers only. So very soon you will get some. Wait, just 1 minute. Huh? This 10th ICSE Nehru is there. So I have been given only few chapters. It is topo sheet is with me. Wait, Nehru is there. So I am going to start the next small chapter. Somebody was asking me transport. How many? Any of the school have asked transport? The next chapter you can write in your notebook. Soils in India. Soils in India. Write down. Write down soils in India. Numerical next Monday same time. उधर ज़्यादा नहीं करूँगा. I'll do only 1 or 2 maximum. Soils in India. Chapter number क्या है? उसका बता. Soils in India. Here these are very simple, straight. If you are happy, we can go straight without the notes. Correct? But you feel any of the questions they want the notes, I am ready. Where's my volume? मेरा volume दे देना. हाँ, आजा, लेकर ही आ. अलसी. तेरा आदत है ना? Munching. I've seen what time you pick up and what time you put it in. Everyone, page number 87. And the introduction, first line में लिखो meaning. Soil is the thin uppermost. उसको thin की जगह पर thinner कर लेना. Second, it supports, open bracket, all forests, grassland, crops, and close bracket supports life. Soil fertility, underline, power of the soil. They will ask you humus. Find, अच्छा humus notebook में लिखो, which I am going to give. ये exam में आता है, what is humus? क्यों? जा. Write down everyone humus. Yeah, both boys and girls, because this break will be a real trouble getting into your recreational room. अभी जाने का तो जगह अच्छा. मैं थोड़ा छुपा के बोल रहा हूँ, बच्चे बड़े हो गए और ये भाई साहब कौन सा रूम. Write down humus. The topmost fertile layer of the soil. Humus or humus, whatever you pronounce. Topmost fertile layer of the soil. Topmost fertile layer of the soil, mainly formed due to decomposition of decayed, DECAYED, dead and decayed material. तो कौन है नोटबुक में नहीं लिख रहा है? Now why not? I ask you to write in the notebook by putting it. Second line. In India, फिर से लिख. फिर से पूछा लिखने से पहले. In India, varieties of soil or variety of soil. Make it simple. In India, variety of soil based on
climatic conditions, relief form. Climatic conditions relief, RELIEF, are formed are not found, are formed. Keep. I am requesting to both boys and girls. फिर उधर जाके लंबा ट्रेन स्टेशन की तरह लाइन बनाओ मत. Write down. Soil number 1, alluvial soil. 2, black soil. 3, red soil. 4, laterite. Careful with the laterite. क्या है उधर है. Now a small task I am giving you. पहला पॉइंट लिखो, alluvial को अलग से ले लो सब हेडिंग में. पॉइंट नंबर 1 लिखो जैसा वॉल्यूम में दिया फॉर्मेशन. सेकेंड पॉइंट लिखो एरिया. थर्ड पॉइंट लिखना कलर. फोर्थ पॉइंट लिखना composition. Write down alluvial soil. And fifth point you write characteristics which I am going to give. बहुत short दूंगा. चलो start writing from alluvial soil looking into the volume. I'll explain in detail, don't worry. उधर है ना सब वॉल्यूम में है. This is how you have to write it in the board exam as well if they ask you one soil separately. Come on. Alluvial soil. यही है उसका फॉर्म. उधर है ना फॉर्मेशन, एरिया, कलर, कॉम्पोजिशन. कैरेक्टरिस्टिक्स यू डोंट राइट. मैं बहुत शॉर्ट ले देता हूँ. तो चुपचाप लिख कर. There are different topics has to be in a different set. That's what I'm saying. Mostly all the topics are. Yes. Wait. You want to go? अभी क्या जम मार के कैसे जाएगा? जा. भाई साहब घर के अंदर याच मत चला, बाहर जा, पानी में उतर. He is doing a yaching practice here. You understand what is yacht? रुक जा. अभी मानसून आने तक मैं तुझे गटर में डालता हूँ. Quickly. Characteristics I am giving. Rest things you slowly and steadily copy down. Point number 1, characteristics. Right now. There you go. Sir. Yes. No. Point number 1 of characteristics. It is. अरे वो जगह छोड़ दो ना. What it is big day. And there are some people who are already in a sleeping mode. कोई बेंच के ऊपर से अभी उठ के बैठ के मुझे देख रहा है. As some. Wait for 2 more hours ना. अभी ये 15 मिनट में जरा अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ, है ना? Then 2 more lectures. Only 2 more lectures ना, not more than that. 3 hours more. So मेरे साथ भी 3 hours ही था. ये 9th standard से नहीं मैंने कुछ नहीं सुना. Write down point number 1 for what did I say? Characteristics. अच्छा एकदम स्लो जाएंगे, ठीक है? आप सो जाना मत, जागर रहो. अच्छा, river deposited soil. River deposited. Second point. Light and porous. Light and porous. Dash डालना with high fertile or high fertility. Light and porous with high fertility
Please write this word in your notebook. Fertility के बाद खादर. There are two soils, but ये लिख लेना मैं बाद में खादर and भांगर. Next point. Rich in. You wait. Rich in. Hyphen डाल देना. Minerals, potash and lime. Rich in minerals, potash and lime. Next. Deficient in nitrogen and humus. Next point. कितना शॉर्ट करते हैं पॉइंट्स है ना? Deficient in nitrogen and humus. Next point लिखना. Soils found in Ganga deltas. मैडम जी लिखिए बाद में ढूंढना. लिखो. Soils found in Ganga delta dash or hyphen rich in humus. Last point. Crops grow. Please. Wheat, rice, ब्रैकेट में डाल देना staple food crop. Staple food crop. I remember a local train incident. Along with sugar cane, Baisa, लिखना. Cotton and jute. Rice and wheat, bracket you write staple food crops, along with sugar cane, cotton, jute, and oilseeds. Now you can close all your books, relax, put your head down and sleep. Seriously. You have any queries, anything, you are most welcome. Officially सोने के लिए तैयारी कर रहा हूँ. So what has happened in your lift? The lift was not working. But how did you come down 17%? Let's start. Don't tell me morning. And your dad was also there. Relax, na? Okay. Nice. Yeah, please. I don't want this hara-kari behavior. If not, I'll never leave. Put your heads down. So you stay nearby. But I could see that last time you were not there with me. Where you were sitting. Thank you. Bas. Those. Thank you. तू किधर जा रहा है? तू वॉशरूम अंदर बैठ जा. नहीं वो तो ब्रेक में जाएगा ही ना. Anybody who wants, my good friends have given. आपको भी दिया. ले लो आप ले लो. अरे ले लो कुछ. अरे enjoy करो. Please have it or give it to her. उसको. Sorry मैं खाएगा. Next time. बिल्कुल. हम लंच में खाएंगे है ना होटल में जाए. कल टाइम Hey, tomorrow you guys are coming 7:30. ये क्या है? क्या चल रहा है? उत्साह? देखो 5 मिनट ब्रेक में हमारे स्टूडेंट सब कुछ कर रहे हैं. हाँ ठीक है. थैंक यू सर. बस बैठो ना. मतलब कैसे? किस बात के लिए चार्जर दे तुझे? दे इधर. चार्ज में कर. अरे मेरे पास कौन सा है? सर एक क्वेश्चन आप पुष्टि कर लीजिए. काफी हमको थोड़ा हमारे पास कौन बोला?
Hey guys, complete your notebook, everything, huh? You want me to be inside or मैं जाऊँ? So you're from which school here? Nobody is here. Do you feel lonely? नहीं, make some friends ना. बेचारा उस रूम में अकेला बैठता है. What's your name? स्मिता. आजा लड़की को जाना. जा. भाई साहब ये क्या है? नहीं बट हाथ में क्या है? खाते खाते जाएगा. जा. मैं वॉशरूम में जा रहा. हाँ तो बैठ तू जा. मैं नहीं जा रहा. At least from last year our handling is improved, but I want better. Sir, इधर अच्छा दिख रहा है. लड़की बैठ मैं उस तरफ. सर ये कौन सा बुक है भाई साहब? डायबिटीज है. बैठ ना. ये आई है ये क्या है? ऐसा है लगता है. मेरे बुक्स गलती से am I not very serious? Yes sir. देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. सर मैंने कुछ किया ही नहीं था. कुछ नहीं चल रहा है. सच में नहीं करता. देख लो क्या मेरा मातृभूमि को शामिल कर दिया है. नॉर्थ ईस्ट में कोई गलत और बॉम्ब इधर लिखे. Guys, thank you everyone. I'll see you in my next lecture. Okay, bye-bye. आराम से खाओ पियो और अच्छे से लेक्चर अटेंड करो. सर आपका बहुत बहुत आभार.